Hello, bachcho. So let's read the question. The question says a polarized neuron is the one that is first conducting stimulus, second having action potential, third at resting potential, and fourth none of the above. So the key concept of this question is polarized state of neurons. न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज एक्साइटेबल बिकॉज of the presence of different types of selectively permeable ion channels. बेसिकली न्यूरॉन के मेम्ब्रेन्स पे कुछ आयन चैनल्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली और सिलेक्टिवली परमिएबल टू ओनली सर्टेन आयंस व्हिच मेक्स देम एक्साइटेबल इन नेचर. जब एक न्यूरॉन एक रेस्टिंग स्टेट में होता है, resting state means it is not conducting any impulse, no impulse conduction. Two things are applicable to this kind of neuron. First of all, it is comparatively more permeable to potassium ions, and secondly, they are nearly impermeable to sodium ions. फोर, जो एक्सोप्लाज्म में होता है, मतलब एक्सॉन के अंदर जो होता है, the inside of the exoplasm contains high concentration of potassium ions as well as low concentration of sodium ions. ऑल्सो एक्सोप्लाज्म के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं. मोर एक्सोप्लाज्म के बाहर, और we can say the fluid outside the exoplasm, it has a lower concentration of potassium ions and a higher concentration of sodium ions. Because of the difference in the concentration of both the ions, it forms a concentration gradient. एक concentration gradient बन जाता है between the exoplasm and the fluid outside the exoplasm. It can be also called the ionic gradient because जो ions का gradient है वो exoplasm में और outside the exoplasm अलग अलग है. This is basically maintained by active transport. This constant concentration of potassium inside ज़्यादा और बाहर sodium ज़्यादा is maintained by active transport by the sodium potassium ATPase transporter. तो called the sodium potassium pump. Concentration gradient का जो result होता है is that कि exoplasm के अंदर जो चार्ज होता है वो कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, एंड बाहर outside the exoplasm it is comparatively positively charged. The membrane is said to be polarized. Also, the potential difference across this resting membrane is called the resting potential. However, whenever a stimulus
is applied to this resting membrane, polarized membrane, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स इंक्रीज कर जाता है विद इन द एक्सोप्लाज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है. So now the membrane is said to be depolarized, which reverses the polarity of the membrane, of the resting membrane, and generates an action potential or impulse at that side. So coming back to the question में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टिंग स्टिमुलस. बिल्कुल नहीं. कंडक्टिंग स्टिमुलस जब एक न्यूरॉन स्टिमुलस कंडक्ट करता है या एक एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करता है, it is a depolarized neuron, so both of them are wrong. Third option is resting potential. Yes, this is right. A polarized neuron resting potential वाले neuron को बोलते हैं. None of the above is also wrong. So the final answer for this question is option C. Hope you understood well. Best of luck.